नमस्कार दोस्तों and welcome to SM Smartprofile Bank Nifty and Nifty analysis for 19th of November 2025. Friends, ये एक एजुकेशनल वीडियो है एंड इसमें हम ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को यूज करके एक मार्केट की डायरेक्शन, एरियाज ऑफ अब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करके एक पॉसिबल ट्रेड एरिया देखते हैं। फ्रेंड्स, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग एडवाइस, किसी भी प्रकार के टिप्स नहीं देते हैं। प्लीज वॉच आवर वीडियो ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड in learning and understanding more about market profile and order flow. Now, friends, having said that, let us see what has happened today, what happened yesterday also, because we could not make an analysis in detail for yesterday. So I'll just give you a quick cover, but I did post it in the Telegram channel in the morning for the benefit of our Telegram channel users. Friends, एक Telegram channel का link भी है, which is in the bottom of the description below the video. So please subscribe to the channel. We have opened this Telegram channel only on the request of people. तो इसको join करिएगा and over there, there is a better understanding of the market profile as certain live updates do keep coming in at times. फ्रेंड्स, कल की मार्केट का एक जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं। कल की मार्केट में क्या हुआ? The market opened over here. These were the volumes area we marked. It took a test of the downward area, did not find any sellers interested in going down, opened and then it made a reversion. So an open test drive and upwards it went. We had a large IB, there was no range extension. We formed a P shape. P shape क्या होता है? Shorts cover up हो जाते हैं very quickly in a P shape and the price jumps very fast. तो आपने इसमें देखा होगा first 5-minute candle बनी and in the second 5-minute candle we just went up and then the price started consolidating after that before closing at the top within the value area. So whenever such a P shape forms, it's very important to know where the opening takes place. If it takes place outside the value area, either on the top or on the bottom. But what is more important is कि क्या price उधर stay करता है? Does it spend time? Does it stick to the higher values? Is it accepted or rejected? Now let us see what has happened on today's video. आज दोस्तों मार्केट कहाँ खुली? Let me split this for you. Market खुली right at the volume area of yesterday at the POC. Market यहाँ पे खुल के it searched the upper areas, went down. It again did not find any follow through. Right? The market went up. And it kept consolidating over here, except the price बहुत मुश्किल से value area के बाहर गई है. It was actually a range extension failure, and that means that there was lack of conviction था, longer time frame participants थे. एक poor high बना, इसका मतलब एक unfinished auction है on the upper side. एक poor low भी बना है. Which means both edges हमारे vulnerable हो गए हैं. ये एक पुअर हाई है, इसको मैं वापस अनस्प्लिट कर देता हूं. ये भी vulnerable है और एक पुअर लो है, ये भी vulnerable है. मार्केट ने क्या किया? मार्केट मेड अ नॉर्मल डे with a small initial balance. Initial balance A और B पीरियड हमारा स्मॉल था. इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम था और कोई भी हायर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेशन हमारे पास नहीं था. आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग हमारी आज की वॉल्यूम पीओसी पे हुई है. मैंने ये वाला एरिया मार्क किया है. यू कैन नोट डाउन दिस एरिया. दिस इज द वॉल्यूम पीओसी. आज की क्लोजिंग ये हुई है, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द क्लोजिंग इज ऑल्सो बिलो द वॉल्यूम पीओसी ऑफ 17th November, right? And since the closing is below the value POC of 17th November, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि बायर्स फेल टू माइग्रेट टू हायर वैल्यू, बायर्स हायर वैल्यू पे जाने में कामयाब नहीं रहे। हमारा रोटेशन फैक्टर क्या है? हमारा रोटेशन फैक्टर पॉजिटिव है डिस्पाइट एक बैलेंस स्ट्रक्चर बना है। कल का जो वॉल्यूम टेल है दैट हैज बीन रिस्पेक्टेड बिकॉज ये एक लो वॉल्यूम टेल था। इसका मतलब ये है कि इट कंफर्म्ड द सपोर्ट ऑफ बायर्स एंड द एब्सेंस ऑफ सेलर्स। हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी मेरा बुलिश है। टुडे जो मार्केट थी वो एक पॉज डे था और एक लार्ज अपवर्ड ऑक्शन थी। कल की प्रोबेबिलिटी मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से क्या है? एक हायर प्रोबेबिलिटी है एक अपसाइड टेस्ट और रिपेयर ऑफ पुअर हाई की। एक सेकंड प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अगर मार्केट वैल्यू एरिया के नीचे खोलती है तो दिस लोअर पुअर लो कैन आल्सो बी टेस्टेड। और एक लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो ये भी है कि एक ट्रेंड डे ऑन द डाउन साइड हो सकता है, right? So let's see what happens tomorrow. But having a trending day downside is a low probability. I will still be looking over to clear this poor high, but we will come to know only tomorrow. Again, the most important aspect: where will the market open? What type of buyers come in? What happens? That will be told to us only and only by order flow. So now let's see what happened in the order flow also. I'll show you the order flow, and by now I think you know what I do. When I get a low volume candle, I just mark it like I marked it here. And अब ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी 9:15 की, राइट? एंड ये एक नीचे मैंने एरिया बनाया हुआ था बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट आती तो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि एक हमें हल्का सा पॉज मिलता, जंप मिलता है यहाँ से। वो जंप कैसा रहता है दिस आई कांट से, बट एक जंप मिलता है बिकॉज ये एक लो वॉल्यूम एरिया था इन येस्टरडेज 9:20 कैंडल विच आई हैड मार्क्ड। बट द मार्केट डिड नॉट कम हेयर, मार्केट यहाँ आई नहीं, ये 5 मिनट की कैंडल के आसपास ही घूमती रही। नाउ दिस वाज व्हाट आई मार्क्ड। अब आप देखो होल डे क्या हुआ है। होल डे it has just been rotating around this 5 minute candle, up and down, up and down, up and down, like a magnet. So this was a pause day for me today, right? Let us see how the market reacts tomorrow, right? And those who would like to know about Nifty, वो भी देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। Nifty market profile, I'll just open it up for you. Here it is. And it is the same thing. I don't take much interest in Nifty, but you see Nifty में क्या हुआ? Same thing. Open हुआ, check हुआ, नीचे आया, extension मिली, B period came down. This was more of a this was a medium IV. Looks like a medium IV. Let me check. Yes, it's a medium. It's a large IV, in fact, right? So एक large IB थी, market made a normal day. It did come down, gave a movement much more than what Bank Nifty gave. But again, an indecisive day. Again, we have to see there's a poor high on top, a poor low at the bottom. Again, we will have the closing is right below the volume area, right? And what type of a rotation factor do I have? I have a rotation factor which is 2 पॉजिटिव है। रोटेशन फैक्टर अभी भी मेरा पॉजिटिव है, वैल्यू एरिया मेरा नीचे आया है, राइट? And there is a migration. Again, a lot is going to depend upon where the market opens, whether we repair the upper poor high or the lower poor high. But low volume areas, I think they are going to act as supports. So let's see when and where the market opens and how things work out tomorrow. This is very interesting, a P shape followed by a normal day with a value with a closing at today's value area below yesterday's value area
with a low volume tail, a mild bullish stance still, but still looking forward to low volume areas acting as supports. So see you tomorrow, friends. When the market closes, we'll come for another analysis and discuss with you कि हमारी probabilities जो हमने दी हैं वो कैसे रही. Did the market go up or did it come down, and did the low volume areas act as support? We'll discuss all these things tomorrow, and we'll also discuss the order flow in detail. So let's see you tomorrow after the market hours, and do join the Telegram channel for better understanding. And if you like this video, please like it, please share it, and forward it to people who are interested in market profile, right? Interested in learning about order flow and market profile. Thank you so much. Bye bye.